While doing research for this video, I came across a lot of articles on internet and get to know people use different words to address this person. A racist, foolish, stupid, and in fact worst leader for all time. So is this the video we're gonna criticize Donald Trump? Actually not, because critics are doing their job very well. This video is about to ask the question, do we really know Donald Trump? Let me answer this question. Actually not. We know him as a politician, but still needed to find out more as a real estate developer and TV celebrity. Hey viewers, this is Krati and I'm going to address the question that how a successful business tycoon entered into politics. We will be addressing some of the core questions that we may have into our mind. But for this, we need to travel 100 years ago. So let's start our journey. So this business term came into Trump family from his grandfather. Grandfather of a Donald Trump named Frederick Trump was a German businessman. He immigrated to USA at the age of 16 and started working as a barber. In his 40s, he managed to bought a hotel. After Frederick Trump, his son named Fred Trump came into this business. Fred Trump was a prominent real estate developer in America and was very famous in New York City. He has been witness of World War I, World War II, recession, Great Depression, and all the events that occurred in 20th century America. I given you the story of his grandfather and father to just give you the little background that how Trump came into this business. अब फ्रेड ट्रम्प के बाद आते हैं डोनाल्ड ट्रम्प. डोनाल्ड ट्रम्प फ्रेड ट्रम्प के बेटे थे और इन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को 1970s में हैंडल किया था. 1970s तक डोनाल्ड ट्रम्प अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके थे एंड ही डिड हिज मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया. इससे पहले वो और यूनिवर्सिटीज एंड मिलिट्री स्कूल में रह चुके थे. द फर्स्ट थिंग डोनाल्ड ट्रम्प डिड आफ्टर एंटरिंग इन हिज फैमिली बिजनेस, उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस का नाम जो है चेंज किया टू अ ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन. अब ट्रम्प की बिजनेस जर्नी में हम फर्स्ट अचीवमेंट ऐड कर सकते हैं जो कि हुई थी 1976 के दौरान. 1976 के दौरान ट्रम्प ने बहुत ही फेमस अमेरिकन हॉस्पिटैलिटी कंपनी के होटल कॉमरेड को खरीदा क्योंकि वो होटल हैवी लॉस में चल रहा था. ट्रम्प की एक स्किल आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी एंड दैट वाज ट्रम्प हमेशा से एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते थे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसको रिबिल्ड करके रेनोवेट करके उसके एक्चुअल कॉस्ट से 10 से 20 गुना बेच दिया करते थे. इट इज़ द रीजन ही वॉज वेरी डिफरेंट इन कंपेरिजन टू हिज कॉम्पिटिटर ऑफ ड्यूरिंग दैट टाइम. बट लेट मी कंप्लीट 1976 स्टोरी. जिस हयात के होटल को उन्होंने 1976 में खरीदा था, इसको रिबिल्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट करके एक नया होटल बनाया और नाम दिया गया Trump Tower, which is one of the famous building into this area. One of the skill that I really like about Donald Trump कि उन्होंने अपने फादर $1 million का लोन लिया था और इस लोन में उन्होंने एक स्लम एरिया को खरीदा. शायद आप ये सोच रहे होंगे कि एक स्लम एरिया को खरीदने की क्या जरूरत थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के पास स्किल थी और वो स्किल ये थी कि वो किसी भी बंजर जमीन को खरीद के उसको रिनोवेट करके रिकंस्ट्रक्ट करके उसको उसकी एक्चुअल कॉस्ट से 10 गुना बना देते थे एंड देन प्रॉफिट गोज टू डोनाल्ड ट्रम्प. 1979 तक आते आते डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत महंगी महंगी प्रॉपर्टीज खरीदी जैसे कि ताजमहल. ताजमहल एट दैट टाइम वाज वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैसीनो एंड आफ्टर बाइंग दिस ही मेड प्रॉफिट ऑफ $273 billion. He sponsored very famous fighters boxing match and this led him to earn a lot of profit and due to this he managed to buy world's second biggest ship and also airlines. But wait a minute, शायद अभी आपको हैप्पी एंडिंग लग रही होगी, लेकिन ट्रम्प की लाइफ में एक बड़ा झटका आना बाकी था. यूएस में 1990s के दौरान रिसेशन आता है और ट्रम्प की वैल्यू 1984 से 1995 तक गिर जाती है. उनको बहुत बड़ा लॉस होता है. इस रिसेशन के दौरान उनको ताजमहल, अटलांटिक सिटी जैसे बहुत सारे अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ना होता है. कैन यू बिलीव दैट ड्यूरिंग दिस टफ टाइम ऑल्सो दिस पर्सन has not given up and Donald Trump survived this recession. This person may be called as unsuccessful businessman during that time, but इसने हार नहीं मानी क्योंकि इन्होंने US recession के बाद एक धमाकेदार एंट्री की थी. That was an entertainment business. 2003 he debuted in NBC reality show named The Apprentice. Basically इस शो में कंटेस्टेंट को compete करना होता था for the management job in Trump organization. Of course अगर Trump organization में जॉब करनी है, it was very difficult interview that was personally taken by
Donald Trump, and he hosted 14 seasons. This was most popular show in America during that time, and with this show Donald Trump earned $230 million. It is huge. During late 20th century he sponsored many of the beauty pageants. He was the owner of a Miss Universe, Miss USA, Miss Teen USA and many beauty pageants. Trump ने अपना एक गेम भी लॉन्च किया था, and this game was Real Estate Tycoon. The ultimate goal of a Donald Trump, he want to make the name Trump as a brand, and that's the reason he entered into entertainment industry. He want brand name Trump everywhere. This is the reason beside Trump Tower he is having other very popular properties: Trump Place, Trump World Tower, Trump International Hotel and Tower. There are Trump Towers in Mumbai, Istanbul and Turkey. Coming back to the 21st century, the question many people ask, क्या ट्रम्प ने अपने क्लाइंट से डील करने के लिए PhD की थी? क्योंकि कोई भी क्लाइंट अगर ट्रम्प के पास आता था तो वो डील फाइनल किए बिना जा ही नहीं सकता था। बट इसके साथ साथ कई सारे एलिगेशंस ट्रम्प के ऊपर लगते हैं। 1990s के बाद जब रिसेशन आया और ट्रम्प को अपने बिजनेस में लॉस हुआ, उन्होंने कई सारे गलत तरीके भी अपनाए। ही वॉज द पर्सन कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने उनके हिसाब से काम नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्टर को उस चीज का पैसा ही नहीं दिया करते थे। He had many rules and regulations. Those were against of a business norm. But this person has his own rule. Not all his business were successful. And here we are having some of the example. Trump ने education sector में भी invest करने की कोशिश की and Trump universities establish की. But यहाँ पे एक major fraud हो गया था और जिसकी वजह से इस university को close करना पड़ा. And this was the journey of a Trump from his famous business tycoon to a president of America. But still, Donald Trump's image as a powerful real estate tycoon led him to carry White House in election for 2016 and became oldest president of America in 2016. But still, at the end of this video, we are having one question to ask our audience. Was really Trump a successful business tycoon? Let me know in the comment section.